Hey guys, welcome to my channel. So this is the very first time guys I am making a seamless inner using non-stretchy cotton, but I never thought the result will be really great. So for this guys, I'm using this printed non-stretchy cotton, and also guys I'm going to show you step by step. So you need 2 front piece and 2 back piece. तो आपको पहले दोनों front piece चाहिए और दो piece back के लिए. तो just keep watching guys. So for 36 hips I'm almost taking 9.5 inch, एंड आपका जो हिप्स मेज़रमेंट आएंगे उससे आप 4 से डिवाइड कर दो उसे, तो यू विल गेट लाइक माइन इज़ 36. सो मुझे 9 इंच मिला है, तो 9 इंच में हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मैं 9.5 ले रही हूँ. आप चाहो तो 10 इंच तक ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए तो. एंड दिस इज़ द हिप आई एम टेकिंग 4 इंच guys. And guys, here I'm going to take the whole length of this underwear is 10 inch. So first I'm marking 9.5 inch, then half inch extra I will add, and then I will take 10 inch. And but if you want high waisted के आपकी आप अगर waist तक इसे चाहते हो, if you want to stretch it to your waist, then take 12 inch. ठीक है guys. तो अब अगर आपको high waisted ये innerwear चाहिए तो you should definitely take 12 inch. So keep watching guys, this is super easy. So first thing I will make the front 2 piece, and then after making the front I will make the back